So if as you are not you are not queries anything, so I'm just start write down features of 8051, features of 8051 or architecture of 8051, whatever it is, features of 8051 or function of 8051, whatever it is. First, this block. Point number 1, 4K on chip ROM, 4K on chip ROM, used as a program memory, used as a program memory. It can be extended, it can be extended, it can be extended up to, it can be extended up to 64K. It can be extended up to 64K. It can be extended up to 64K. सर ये ब्लॉक के फंक्शन समझ में आया? जो मैंने बोला था पिछला दिन, आज सर सिर्फ लिखाया उसको. किसी का इस लाइन में कोई क्वेरीज है? सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिएगा लाइन. Write down point number 1, features of 8051. On chip 4K ROM, on chip 4K ROM, on chip 4K ROM, which can be used as a program memory. It can be extended up to 64 kilobyte. सर मीनिंग क्या बोला पता है चला किसी को? ना कोई डाउट्स है किसी को? मीनिंग कैसे क्या पता चला बोलो तो एक बार. सर किलो बाइट होगा कि ओनली किलो? किलोबाइट, केबी, 64 किलोबाइट. बाइट भी लिख सकते हो, किलो भी लिख सकते हो, ऑलवेज बाइट ही होता है जो भी है. क्या बोल रहा था? इसका मीनिंग क्या बोला बोलो तो? काल तो बोले थे सर आप 128 बाइट है, आज बोल रहे 128 किलोबाइट है, आज बोल रहे 64 किलोबाइट है. क्या फंक्शन है? बोलो. सर रोम के अंदर 64 किलोबाइट तक लिख सकते हैं ना सर. So 64 for programs, 64 for data डाटा memory, sir. मेमोरी ये मैंने बोला. देखो 4K इज यूज्ड एज ए प्रोग्राम मेमोरी. सो प्रोग्राम मेमोरी के अंदर ये आ रहा है. सो प्रोग्राम मेमोरी के अंदर आ रहा है, इसीलिए प्रोग्राम मेमोरी 64 किलोबाइट एंड डेटा मेमोरी 64 किलोबाइट. So that's why it is a 4K is available. If you require, you can extend up to 64K. Up to 64K. Next, this block. On chip 128 bytes RAM. On chip 128 bytes RAM. On chip 128 bytes RAM. Which also extended up to 64 kilobyte, which also extended up to 64 kilobyte. Next, two on chip 2 16-bit on chip 2 16-bit TWO2 16-bit on chip 2 TWO2 16-bit timer oblique counter which is count internal or external clock pulses, which is count internal or external clock pulses, which is count internal or external clock pulses, which is count
internal or external clock pulses. I'm repeat once again. Two 16-bit timer oblique counter which is count internal or external clock pulses. Which is count internal or external clock pulses. Is it clear to all? Yes, sir. नेक्स्ट फिर टाइमर और काउंटर क्या है एक बार बोल सकते हो? जो टाइमर है वही काउंटर है. काउंटर क्या है, टाइमर क्या है? विथ ए सुइटेबल एग्जांपल. नाम तो सुने होंगे टाइमर एंड काउंटर. लगता है एक ही है ना? थोड़ा डिफरेंट है. कौन कौन है इधर में लिस्ट में? रिया शायद है. जो पिछला दिन नहीं आया था आज आया है. रिया पिछला दिन क्लास में था. यस सर थे. लास्ट तक नहीं थे शायद. क्या सर थे. थे? अच्छा थे. कौन नहीं था? ये नहीं था ऊपर में एकदम. अजय. अजय तुम नहीं था ना? अजय कैन यू हियर मी? शायद इस आज भी नहीं है. फोन करके चला गया. ये तुमने नहीं था तो आज क्लास में आया. तुम हमको देखते हो बहुत शांत शिष्ट फैकल्टी है, मतलब बहुत भोले वाला. आई एम नॉट लाइक दैट. You know, I am a very tough teacher. I given every day, you know, for students those are not coming yesterday, I given some punishment. And whenever I am a, you know, regular teacher, in that particular time I am doing the same. So I am given the Avinas the punishment of 100 times uthak bathak karna hai. Up and down, 100 times. Is it clear to all of you? यस सर. तो ये जो उठक बठक करेगा अविनाश से खुद से ही काउंट कर रहा है. मैं उसके ऊपर टास्क किया. जो अविनाश इज ए परफेक्ट मैन, ही इज नॉट डूइंग एनी गिल्टीज एंड ऑल. सो अविनाश काउंट कर रहा है खुद से. 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके काउंट कर रहा है. अभी तक उसको काउंट करके 100 होने जा रहा है. अविनाश किसके ऊपर डिपेंड करेगा? खुद के ऊपर. जितना खुद के ऊपर डिपेंड करेगा. एग्जैक्टली. सो अविनाश इज जनरेटिंग द और काउंटिंग इज नथिंग बट अकॉर्डिंग टू हिज ओन. According to his own means counting the internal clock pulses. Counting the internal clock pulses. Maybe Avinash, you know, sitting one and counting 2 or 3. You cannot say anything. 1 2 3 4 5 6 7 8. But he's sitting only 1 and 2, but he counting up to 10. So in this way, he counts the internal clock pulses. He counts the internal clock pulses. But मान के चलो हम आशीष को जिम्मा दिया है. आशीष को जिम्मा दिया है. आशीष यू नो वेरी क्लोज टू मी. मैं आशीष को जिम्मा दिया है. जो अविनाश को जो 100 बार जो उठक बैठक कर रहा है, तुम गिनती करो. अभी आशीष किसके ऊपर डिपेंड करेगा? अविनाश के ऊपर. अविनाश के ऊपर मतलब एनी एक्सटर्नल इवेंट के ऊपर. अविनाश से 3 बार करके बोलेगा सर हमसे और नहीं हो पा रहा है, इतना एज हो गया, इसमें सर और नहीं हो पा रहा है, चाइल्डहुड का ये था, अभी नहीं हो पा रहा है. मतलब Avinash wants to take some rest. In that particular time, what are the status of Ashish? Ashish will be idle, no counting, pause counting. Am I right? Again sit, again sit down, and Ashish will be counting. So basically, this is nothing but a external clock pulses count. So count may be external, may be internal. If internal clock pulses, then the name is timer. If external clock pulses, person is same, name is different, is a
Counter is a counter. Is it clear? Is it clear? Now ISL is going on. Say Ashish is a very very good football player. He's a goalkeeper. So Ashish in that particular time name is tell me. जब खेलेगा आशीष उसका नाम क्या होगा? फुटबॉलर ना गोलकीपर है तो गोलकीपर ही बोलूंगा ना, गोलकीपर। अभी आशीष को क्या बोलेंगे हम? एज ए स्टूडेंट। देखो आशीष पर्सन इज द सेम, but depend upon the operations, depend upon the functions, I given a different name, like student, like goalkeeper. Similarly, timer and counter basically same. There is a no two counter, two and timer, not like that. Either two timer or two counter, whatever it is. If count the internal clock pulse, then it's called timer. If count the external clock pulse, then it's called counter. It's clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. So can I proceed for the next? Can I proceed for the next? Yes, sir. Yes, sir. Next, UART. Full form of UART. On chip UART. Write down on chip UART. Within a bracket, you are write down the name Universal Asynchronous Receiver and Transmit. 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 Okay. Universal Asynchronous Receiver and Transmit. Where TXD is used for transmission and RXD used for reception. Where TXD used for transmission and RXD used for reception. Where TXD used for transmission and RXD used for reception. I'm repeat once again, where TXD used for transmission and RXD used for reception. UART, Universal Asynchronous Receiver and Transmit. Is it clear? Clear to all? Yes, sir. Yes, sir. So write down on chip UART, which is used as a full duplex serial transmitter or receiver. Full duplex serial transmitter or receiver. Full duplex serial transmitter or receiver, which is used as a full duplex serial transmitter or receiver. That serial transmitter or receiver. फुल डुप्लेक्स सीरियल हाँ बोलो। क्या बोले उसके बाद? सीरियल रिसीवर एंड ट्रांसमीटर. हाँ बोलो। से एक बार रिपीट कीजिए ना. On chip UART, full form Universal Asynchronous Receiver and Transmit, which is used for serial transmission and reception, which is used for serial transmission and reception in full duplex mode. In full duplex mode. What is a full duplex? What is a simplex? What is a half duplex? All are described yesterday. Am I right? Yes, sir. Full duplex, just like a mobile phone, means always you can say always communication is both the way, either Both side transmission of or reception. communication.
Yeah, both side of communication. Next is IO port. 4 IO port P0, P2, P1, P3. 4 IO port P0, P1, P2, P3. These 4 IO port is available. So you are write down on chip 4 8-bit IO port on chip माने chip के अंदर on chip 4 8-bit on chip 4 4 8-bit IO port available. IO port available. 4 IO 8-bit IO port available. Where P0 and P2, where P0 and P2, where P0 and P2 used as a, where P0 and P2 used as a where P0 and P2 where P0 and P2 used as a where P0 and P2 used as a address oblique data bus multiplex. Address oblique data bus multiplex. Address oblique data bus multiplex. Next point, on chip bus controller, which is control all the buses, 8-bit CPU optimization for process control. 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 Eight-bit CPU optimization for process control. सर वो क्या बोल रहे हैं? On chip bus controller which is control all the buses. All the buses. Bus complete. Next point. On chip 8-bit CPU optimization for process control. हाँ वो हो गया. Optimization for process control. Next point, on chip oscillation circuit. On chip oscillation circuit, which is control on chip oscillation circuit, which is generate clock pulses for microcontroller. On chip interrupt controller. On chip interrupt controller, which have 2 external interrupt, 3 internal interrupt, which have 2 external interrupt and 3 internal interrupt. Out of these 5 interrupt, only 1 interrupt are sending into the CPU. Out of these 5 interrupt, only 1 interrupt are sending into the CPU. Out of these 5 interrupt, only 1 interrupt are sending into the CPU. Out of these 5 interrupt, only 1 interrupt are sending into the CPU. 2 external interrupt, 3 internal interrupt. Out of these 5 interrupt, only 1 interrupt are sending into the CPU. Two external interrupt, 3 internal interrupt. Out of these 5 interrupt, only 1 interrupt are sending into the CPU. It's clear to all?
Is it clear to all? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Next, next point, 8051 working in 12 megahertz clock pulses. 8051 worked in 12 megahertz, you know, 12 megahertz. Clear? So architecture part is complete. Sir, 8085 worked in 12 megahertz. 12 megahertz frequency. 12 megahertz frequency. Operating in 12 megahertz frequency. Next our next thing I will be discussed about the internal RAM of 8051. Internal RAM of 8051. Sir, what are the RAM size? What are the RAM size? 128 byte. 128 byte. सर 0 to 127 बोल सकते हैं? Yes, sir. Yes, sir. सर इसको 00 to 7H बोल सकते हैं? Hexadecimal में just convert it to Yes, sir. hexadecimal, nothing else. Okay, just see the internal RAM structure. It's a very important one. This is the internal RAM structure. It is the internal RAM structure. Okay, the internal RAM structure. Remember, all are R0, R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7. Similarly, R0 to R7 over here. Similarly, R0 to R7 over here. Similarly, R0 to R7 over here. Okay, this is called bank 3. This is called bank 3. This is called bank 2. This is called bank 1, and this is called bank 0. So locations, it is a 00H, it's a 07H, it's a 08H, it's a 0FH, it's a 09H, sorry, 10H, it's a 17H, it's a 18H, it's a 1FH. Okay, 00 to 07, 08 to 0F, 10 to 17, 18 to 1F. Sir, can you calculate once again? So just see 00, 00, 01, it's a 00, it's a 01, it's a 02,
it's a 03, it's a 04, it's a 05, it's a 06, it's a 07. So next will be 08, 09, 0A, 0B, C, D, E, F. Is it clear or not? Yes, sir. Huh? Now questions will be coming like that. So this is called bank 3. This is called bank 3. This is called bank 2. This is called bank 1 and this is called bank 0. Sir, how many R0 register is there? 4. How many R5 register is there? 4. Every register have 4. Maybe in a bank 0, maybe in a bank 2, maybe in a bank 3, maybe in a bank 4. Next questions will become bank 3, R4 register. What are the locations? क्या होगा बोलो तो? बैंक 3 R4, बैंक 3 R0 कितना एड्रेस है? 18. तो R1 क्या होगा? 19. R2 20. 1A. 1A होगा सर 1A. Next 1B होगा ना 1B. 1B. 1C होगा सर R4 1C होगा 1C. 1CH. Is it clear to you or not? यस सर किसी का कोई डाउट्स है तो बोलो. किसी का कोई डाउट्स है तो बोलो. No, sir. मैं फिर से बोल रहा हूं. बैंक 3 R4, 18 is for R0, 19 for R1, 1A for R2, 1B for R3 and 1C for R4. Okay. Next, bank 3 R6 क्या लोकेशन होगा? So 1E. 1E 1E. Very easy. 1A plus, तो इसका पहले 1E होगा. Okay. Similarly, bank 2 R4 register क्या होगा? So 1-4. 0C 0C 10. सर 1 है उसके बाद क्या होगा? 1 1 11. उसके बाद 1-2. उसके बाद 1 3 1 4 होगा 1 4 होगा सर 1-4H. Okay. Remember these locations. These are the 32 registers. These are 32 registers. All are in an internal RAM. The next location 20 to 2F. This location is called bit addressable area. 1 4 होगा 1 4H. अब बोलो बाबली. Okay. This is a 20 to 2F is a bit addressable area. 20 to 2F. हाँ बोलो. सुनाई नहीं दिया. सर 1F के बाद 20 इधर से स्टार्ट होगा. हाँ इधर से स्टार्ट होगा. यही लोकेशन है 20 से 2F तक. ये है बीट एड्रेसेबल एरिया. बीट एड्रेसेबल एरिया क्या है हम डिटेल्स में आएंगे. पहले बोलो ये रजिस्टर के बारे में सब समझ में आया? Yes. ये जो लोकेशन है इसको बोलते हैं रजिस्टर बैंक. 4 बैंक है. बैंक 0, बैंक 1, बैंक 2, बैंक 3. हर एक बैंक में 8 करके रजिस्टर है. 8 रजिस्टर्स करके ईच बैंक.
So total 32 registers is there. Total 32 registers is there. It's clear to all? Yes, sir. Yes, sir. Is it clear to all? Yes, sir. इसमें किसी का डाउट्स नहीं है तो हम ए वाला एक्सप्लेन कर रहे हैं अभी ऊपर में. बीट एड्रेसेबल एरिया 20 से 2F. पहले हम 8085 के बारे में बोलूंगा. अरे 20 से 2F कैसे? हाँ सर, इसके बाद 1F के बाद क्या होगा? अच्छा हाँ सर. 20 होगा. 20 से जाते जाते 2F तो होगा ना. इसके बाद भी है. हम इतना दूर तक बोल रहे हैं 7F तक जाएगा. ये तो इस पहले समझाया. कितना दूर तक जाएगा? 7F तक जाएगा. हम अभी शुरू किया है इंटरनल रैम 00 से 2F तक किया है. इसके बाद भी और आगे बढ़ेंगे. राइट. सिर्फ 20 से 2F तक हम अभी किए हैं. अभी इसको हम एक्सप्लेन करेंगे. उसके बाद हम नेक्स्ट वाला पोर्शन जाएंगे. ये वाला समझ में आ गया ना? बैंक वाला. यस सर. ऑल आर इन इंटरनल रैम. इसके बाद जा रहा है 1F के बाद 20 और 2F 20 से लेकर 2F तक. इसको हम लोग बोलेंगे बीट एड्रेसेबल एरिया. बीट एड्रेसेबल एरिया क्या है? पहले इसका मीनिंग क्या है बीट एड्रेसेबल एरिया. मान के चलो इन 8085 के बारे में बोल रहा हूं. 8500 में एक डेटा था. क्या था? AB था. तो इट विल बी स्टोर इन अ बाइनरी. तो 8500 में एक्चुअली क्या था? 10101011. यही था ना? Yes, sir. या नाम है बोलो. Yes, sir. Yes, sir. मान के चलो I want to copy this bit. Is it possible? कॉपी करना चाहता है. Copy or cut or delete or change anything. Is it possible? No, sir. No, sir. Maybe rotation there is a possible. Means you should be write a program for that. But it can be possible in you can change any bit. Any bit change possible? No, sir. Because in 8085 all are byte addressable. तुमको चाहिए तो तुमको ये पूरा byte लेना पड़ेगा. If you want to copy, total byte can be copy. If you want change, total byte can be changed. If you want to delete, total byte can be delete. Is it clear or not? Yes, sir. Yes, sir. कोई भी particular bit is not possible to copy or change or paste. Whatever it is not possible at all. If you want to change the totally. Is it clear? Yes, sir. Is it clear to all? Yes, sir. Yes, sir. Very good. So I want to change or copy. Is it not possible? So कैसे होगा इसका? देखो अभी 20 से 2F ये जो लोकेशन है इसको हम इलाबोरेटली इधर ड्रॉ कर रहे हैं. उधर पॉसिबल नहीं है इसीलिए. This is 20, this is 21, up to this is 2F. Sir, 20 to 2F, how many locations are there? Bolo? 16. 15. 15. 16. 16 sir. 16. सर एक मेमोरी लोकेशन में कितना बिट का डेटा स्टोर हो सकता है? कोई भी मेमोरी लोकेशन में पहला दिन बोले थे 8 बिट. तो हर एक मेमोरी लोकेशन ये जो रजिस्टर है ना सारा रजिस्टर 8 बिट का है. ये जो रजिस्टर्स है ना सारा रजिस्टर 8 बिट का है. ये जो मेमोरी लोकेशन है ना 20 to 2F हर एक मेमोरी लोकेशन में 8-8 करके बिट रख सकते हैं. 8 बिट करके रख सकते हैं. तो हर एक का अलग अलग एड्रेस होगा. जैसे 00, 01, 02, 03, 04,
05 06 07 08 up to 0F। सर बोलो तो एक टोटल कितना एड्रेस होगा? एक एक मेमोरी लोकेशन में 8-8 बिट, तो 20 से 2F कितना बिट होगा? सर 32 बिट सर। सर 20 से 2F कितना मेमोरी लोकेशन है? 16 से 20 से 2F 16 16 लोकेशन। एक एक मेमोरी लोकेशन में कितना करके बिट है? 256 हो जाएगा सर। एक एक मेमोरी लोकेशन में कितना बिट करके है? 8 बिट 8 बिट। कितना मेमोरी लोकेशन है? 16 into 8 16 into 8 कितना होता है? 122 128। क्लास 3-4 है ये। So again 002 127, again 002 7F, so last address will be 7F 7E, ऐसे करके इधर से शुरू होगा 78। ये जो 20 से 2F इसका नाम है बाइट एड्रेस। इसका नाम है बाइट एड्रेस। ये जो 00207 इसके हर एक का बीट है D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7। Okay, and those address is called bit address. Those address is called bit address. You can access any memory locations bit using this address. You can access any particular bit using this address. Is it clear or not? से तुमको लग रहा है जो 20 मेमोरी लोकेशंस में मान के चलो ए बी है, 20 मेमोरी लोकेशंस में ए बी है, मतलब ये D0, D1, D2, D3, D0, D1, D2, D3 मतलब 03H का कंटेंट तुम कॉपी करना चाहते हो तो 03H का कंटेंट कॉपी करो, बिट एड्रेस 03H का, सो ऑटोमेटिकली ये 1 कॉपी हो जाएगा। डिलीट करना चाहते हो तो इस 03H का कंटेंट को डिलीट करो तो डिलीट हो जाएगा। हर एक का इंडिविजुअली एक एक एड्रेस है, तो ए है बाइट एड्रेस, ए है बिट एड्रेस। इज इट क्लियर और नॉट? Yes sir, clear. Clear to all of you? Any queries? No sir. If you एक बार बिट और बाइट वाला थोड़ा क्लियर कर दीजिए ना। कौन सा वाला? बिट और बाइट। बीट और बाइट। मान के चलो ये 8500 में एबी था ना, वो 8500 छोड़ दो, अभी वो तो 8085 में था। अभी मान के चलो 20H में एबी है, 20H में एबी है। एबी मतलब 110101011। इधर से देखो D0, D1, D2, D3, D3 बिट मतलब D0, D1, D2, D3 मतलब 03H का कंटेंट तुम चाहो तो कॉपी कर सकते हो, तुम चाहो तो डिलीट कर सकते हो यूजिंग द बिट एड्रेस। बिट एड्रेस मतलब इन दैट पर्टिकुलर एड्रेस यू कैन स्टोर ओनली बाइनरी नंबर 0 और 1। बाइट एड्रेस मतलब you can store 8 binary number because 8 bit is equal to 1 byte. So you can store 8 binary number, and in any particular bit you store only single bit, either 0 or 1 you can store. Is it clear or not? You cannot store AV in a bit address. Bit address you store either 0 or 1. It's clear? Yes sir. Yes sir. Next question is that, sir, in between this there is a, you know, there is a locations maybe 5C, 00 to 7F के अंदर 5C भी होगा, हाँ या ना? Yes sir. तो अभी क्वेश्चन आएगा कि ये 5C कौन सा बाइट एड्रेस में एंड कौन सा बीट में मतलब D0 to D7 में कौन सा बीट में होगा, कौन सा बाइट एड्रेस कौन सा बीट। क्वेश्चन आएगा, राइट डाउन द क्वेश्चंस। इफ बीट एड्रेस
5ch, if bit address 5ch, then calculate corresponding byte address and which bit. Then calculate corresponding byte address, then corresponding byte address and which bit. 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 Is it clear or not? Yes, sir. So 5C is our bit address. Next calculate कैसे bit address से byte address करेंगे. Bit address बोला 5C. Any guess how it will be done? 2B. कैसे होगा सर बोलो. सर हर एक के लिए 2-2 है सर, जैसे कि No sir. Convert it into the decimal. Convert it into the decimal. क्या होगा सर? 0 1. 5 into 16 to the power 1 plus 12 into 16 to the power 0. So how much? 80 plus how much? 12. Total. Okay. 92 divided by 8. Why divided by 8? Because हर एक 8 bit 8 बिट करके है, हर एक मेमोरी लोकेशन में 8 बिट करके एड्रेस है. कितना ऊंचा जाएगा हम ये पकड़ने का कोशिश कर रहे हैं. yes, तो sir. 8 से डिवाइड करो. 1 8 12 1 8 4. सर कितना हुआ? 4 is a reminder, 11 is your result, right? So write down byte address is equal to byte address is equal to byte address is 11. equal to 4. 20 plus 0b. Within a bracket you write down 11 in decimal, 11 in decimal, 11 in decimal, 11 in decimal is equal to 2b h. As reminder is 4, as reminder is 4, therefore it's a D4 bit. As reminder is 4, therefore it's a D4 bit. As reminder is 4, therefore it's a D4 bit. सर ये ऊपर में क्या लिखे है? 20 plus 0 bit. 20 plus उसके बगल में क्या 0b. लिखे है? 20 plus 0b, 11 in decimal. तुमको समझ में नहीं आएगा 0b किधर से आया. ये जो 11 आया था उसी का हेक्साडेसिमल फॉर्म. ये तो डेसिमल में आया था, इसका हेक्साडेसिमल क्या होगा? 0b. हाँ सर. उसी को हम किए हैं. और सर डी कहाँ से आ गया ये बिट वाले में? हाँ? सर D4. डी ये जो रिमाइंडर 4 है इसीलिए D0 D1 D2 D3 D4 D4 में होगा. यस सर. सर रिमाइंडर कुछ भी नहीं होता था तो D0. Zero. D0. D0 बिट.
सर रिमाइंडर 8 आएगा तो D7. D7 रिमाइंडर 8 आएगा तो D7 होगा। सर फिर D0 ही होगा। डिवाइड ही कर रहे सर हैं। D8 का भी रिमाइंडर आ ही नहीं सकता है क्योंकि 8 से डिवाइड कर रहे हो। 8 से छोटा आएगा 0 to 7 जो आएगा वो है इधर से इधर। इज इट क्लियर? Yes, Yes, sir. 8 से डिवाइड कर रहे हो 8 और 8 से ऊपर कैसे आएगा रिमाइंडर? पॉसिबल ही नहीं है। सर 20 के साथ क्यों ऐड किया? सर क्योंकि सर 20 से क्योंकि स्टार्ट हुआ है। 20 से स्टार्ट है इसीलिए। स्टार्टिंग है। yes, sir. It's clear to all of you? It's clear to all of you? Yes. Yes. Yes, sir. Next 302 3F 302 7F. This location is called byte addressable area. Byte addressable area मतलब same as 8085 और मेमोरी लोकेशन से एक एक करके डेटा कॉपी करो। हाँ it's clear to all of you? Yes, sir. So these are the byte addressable area, these are the bit addressable area, and this is the locations. Clear to all of you? So can I proceed? So next, sir, internal RAM is 002 7F. 7F. So internal F is says closed, but remember from 802FF it's also under internal RAM. It's a call SFR area. SFR area. Full form of SFR is special function register. Special function register. अभी हेडिंग करो स्पेशल फंक्शन रजिस्टर बोल के SFR. Number 1 special function register SFR. Number 1 A used as a 8-bit accumulator. 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 Used in any arithmetical and logical operation. सर उसी में है उसी में. Used in any arithmetical and logical operation. Number 2 B. B is a general purpose register which is used in multiplication and division operations only. Which is used in multiplications and division operations only. Which is used in multiplications and division operations only. I'm repeat once again. B is a general purpose register which is used in multiplication and division operations only. Okay. Number 3 DPH. Number 3 DPH. Full form data pointer high. Full form data pointer high.
full form data pointer high. Full form data pointer high. Next, number 4, DPL, data pointer low. Data pointer low. Together called, together ऐसे करके एक ब्रैकेट दे दो, उसके बाद लिखो together called DPTR register. Together called DPTR register, which is only one register, to point any external memory location. Any external memory location for input or output. For input or output. Number 5, SP, full form stack pointer, used to store the top of the stack address. Used to store the top of the stack address. Used to store the top of the stack address. Push up the write down. By default value of stack pointer. By default value of stack pointer is 07H. 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 Next, P0. Port 0 buffer register. Port 0 buffer register. Used to store content of port 0 for input and output operation temporarily. For input and output operation temporarily. सर क्या लिखो है इसमें, एक बार बोलो कोई P0 में. Port 0 buffer register used to store content of port 0 for input and output operation temporarily. Temporarily. P1 write down, तुम लिख लो port 0 के जगह में port 1. Next P2. Next P3. Okay. Port 1 buffer register, port 2 buffer register, port 3 buffer registers, everything is same. Only port 0 is replaced by port 1. Is it clear? Yes, sir. Next, number 10. Next, number 10. SBUF. SBUF. Serial buffer register. Serial buffer register. Serial buffer register. SBUF serial buffer register. Serial buffer register used to store
the content for serial communications, used to store the content of serial communications, either for input or output, either for input or output, either for input or output, either for input or output. Sir, serial communication. In serial communications, used to store the content of serial communications, either input or output. Okay, sir, how many timer are counted? Two, sir. 2. Very good. TI is 0. Write down timer 0 high. Timer 0 high. Number 12. TL0. Timer 0 low. Timer 0 low. Together called timer 0 register. Together called timer 0 register, which is used for internal or external clock pulses count, which is used for counting the internal or external clock pulses, which is used for counting the internal or external clock pulses, which is used for counting the internal or external clock pulses. It's clear? Yes, sir. Next, 13. TH1 14 TL1. तुम लोग लिख पाओगे? TH1 का फुल फॉर्म क्या होगा? टाइमर 1 हाई. टाइमर 1 हाई. TL का? टाइमर लो हाई. टाइमर 1 लो. हाँ, टाइमर 1 लो. टाइमर 1 लो. Together is called टाइमर 1 रजिस्टर. टाइमर कितना बिट का था? मैंने बोला था टाइमर 0 और टाइमर 1 कितना बिट का है? मैंने आज भी लिखाया एकदम शुरुआत में 2 डैश बिट टाइमर ऑब्लिक काउंटर. कितना बिट का बोला था? देखो फीचर्स ऑफ 8051 में मैंने लिखा था. बोलो. 216 बिट. 216 बिट टाइमर ऑब्लिक काउंटर. 216 बिट टाइमर ऑब्लिक काउंटर. Okay, complete. Next, number 15. सर टुगेदर कॉल टाइमर रजिस्टर के बाद क्या Timer लिखना है? 1 register. Together called timer 1 register. ओके सर. Together called timer 1 register. It is the timer 0 register. Together is called timer 1 register. यस सर. Complete. यस सर. Next is IE. Full form interrupt enable. Interrupt enable. To enable or disable. To enable or disable. To enable or disable. To enable or disable the maskable interrupt, IE will be used. IE will be used. Next is IP. Next is IP. Full form interrupt priority. Full form interrupt priority. Full form interrupt priority.
To enable or disable the interrupt is IE is used. To select the various priority of any interrupt, to select the various priority of the interrupt, to select the various priority of the interrupt, IP is used. IP is used. IE का फंक्शन क्या है, IP का फंक्शन क्या है, एक स्टोरी बोल के सुनाओ तो। मैंने देखो इधर से एक दाग दिया, इसके बाद हम पूरा डिस्क्राइब करेंगे बाद में, अभी थोड़ा थोड़ा बोल रहे हैं। एक एग्जांपल के साथ बोलो तो, बोलो। सर जो मास्केबल इंटरप्ट होता है उसको इनेबल करना या डिसेबल करना वो हम लोग का आई डिसाइड करता है। बोलो 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 बोलो, समझ में नहीं आया। इंटरप्ट इनेबल डिसेबल मान के चलो, हमको जैसा लग रहा है, हमको जैसा लग रहा है अजय कुमार महतो, प्रीति रॉय, पंकज कुमार महतो, उसके बाद रिया कुमारी, सत्यम प्रकाश, सूरज मुंडू, यस सर। विकास कुमार एंड विक्रम सोरेन, इन लोगों को लग रहा है हम मास्क करके रखा है, इन लोगों को लग रहा है हमको मास्क करके रखा है, मतलब इन लोग कुछ बोलेगा नहीं, चुपचाप बैठे। कुमार शुभम चुपचाप बैठे रहेगा, जस्ट मास्क करके रखा है मैंने इन लोगों को, इन्हें डिसेबल कर दिया है। ठीक है ना, यही फंक्शन है आई का, किसको हम इनेबल करें किसको हम डिसेबल करें डिपेंड करेगा आई के ऊपर। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यस सर। Yes. एग्जाम्पल, एकदम रियल लाइफ एग्जाम्पल दो ना तो अच्छा लगे। आई मान के चलो अंकिता का प्रायोरिटी सबसे क्या है, लास्ट है ना? यस सर। अभी अंकिता हमको 2 चॉकलेट खिलाया, क्या नाम, फ्रूट एंड नट, बड़ा वाला, इतना बड़ा वाला, है ना? तो अंकिता को क्या होना चाहिए प्रायोरिटी? आई। आगे होना चाहिए ऑब्वियसली। तुम लोग कुछ खिलाया नहीं हो, कुछ खिलाया, उसको हम पहले कैसे लास्ट प्रायोरिटी दे? तो उसको हम प्रायोरिटी चेंज भी कर सकता हूँ। अंकिता को इस बार हम हाईएस्ट प्रायोरिटी कर देंगे यूजिंग आईपी। किसी का प्रायोरिटी हाईएस्ट करना लोएस्ट करना वो काम होता है आईपी का। आई विल बी डिस्क्राइब लेटर ऑन बीट बाय बीट क्या फंक्शन है। नेक्स्ट 17 टी मॉड, फुल फॉर्म टाइमर मोड, फुल फॉर्म टाइमर मोड, फुल फॉर्म टाइमर मोड, फुल फॉर्म टाइमर मोड, full form timer mode, used to select the various mode of timer, used to select the various mode of timer, used to select the various mode of timer, used to select the various mode of timer। मोड में क्या फंक्शंस है नहीं है वो हम बाद में डिसाइड कर बोलेंगे तुम लोगों को। मोड सिलेक्शन कर सकते हैं टाइमर को। 18 टीकॉन, फुल फॉर्म टाइमर कंट्रोल, फुल फॉर्म टाइमर कंट्रोल, full form timer control, used to control the timer operations, used to control the timer operations, used to control the timer operations, used to control the timer operations। okay,
used to control the timer operations. Nineteen, used to control the timer operations. Next, SCON, full form serial control, used to control the serial communications, used to control the serial communications, used to control the serial communications. Next, 20, PCON, power control, used to control the power consumption of a microcontroller, used to control the power consumption of a microcontroller, used to control the power consumption of a microcontroller, used to control the power consumption of a microcontroller. सर पीकॉन का फुल फॉर्म क्या बताएं सर? TCON, यस सर, पीकॉन C-O-N. TCON तो 18 वाला, नो सर 20 वाला. PCON power control, used to control the power consumption of a microcontroller. Next, 21, power consumption of a microcontroller. Next, 21, PCON power control, used to control the power consumption of a microcontroller. Complete. Next, PSW. Next, PSW, full form program status word, full form program status word, full form program status word. Similar like a flag register of 8085. Similar like a flag register of 8085. Similar like a flag register of 8085. With the help of this register, we can know the status. We can know the status of any flag. Is it clear to all of you? These are the SFR register. सर SFR का फुल फॉर्म? स्पेशल फंक्शन रजिस्टर, स्पेशल फंक्शन रजिस्टर. इधर से इतना दूर तक हमको पूरा डिस्क्राइब करना पड़ेगा. ये हर एक शॉर्ट नोट आ सकते हैं, आई, आईपी, टीमोड, टीकॉन, एसकॉन, पीकॉन, वीएसडब्ल्यू. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसके ऊपर प्रोग्राम भी करना पड़ेगा, हम लोग आएंगे सब बाद में. पहले एक डिस्क्राइब किया है. सर PSW वाला एक बार रिपीट कर दीजिए ना. PSW program status word. This is a similar like flag register of 8085. This is similar like flag register of 8085. With the help of PSW register, we can know the status of any arithmetical logical operation in 8051. Complete. यस सर. आज के ज्यादा दवाई और देंगे नहीं, और एक दवाई देंगे सिर्फ एलोपैथिक. दवाई तो बहुत टाइप का होता है ना, होम्योपैथिक, एलोपैथिक. अभी एलोपैथिक एक दे देंगे, बस उसी बात खत्म. बहुत अच्छा से सुनना. आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन लिसन वेरी 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 केयरफुल. इसके ऊपर डिपेंड करके सारा इंस्ट्रक्शंस खड़ा है. ये तुम समझ में आएगा तो सारा इंस्ट्रक्शंस बोल पाओगे, नहीं समझ में आएगा तो एक भी इंस्ट्रक्शन तुमको पता ही नहीं चलेगा क्या फंक्शन सर बोल रहे हैं. There are 4 type of instruction you should be remember. Number 1, move A comma #32. Number 2, move A comma 32. Number 3, move A comma R0. And number 4, move A comma at the date of R0. It's clear? It's clear to all?
हाँ बोलो। सर ये R0 जो लिखता है वो उसके बगल में ही रहता है कि उसका नीचे सफिक्स मतलब नीचे रहता है? नीचे भी दे सकते हो, साइड में भी दे सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर में प्रोग्राम लिखना थोड़ा दूसरा टाइप का है, हम बताएंगे। ऐसा बात नहीं है, R0 साइड में भी लिख सकते हो, स्मॉल में भी लिख सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आर और स्मॉल ये में तुमको 0 लिखना है, सफिक्स में ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है कैपिटल आर एंड नंबर 0, दैट्स व्हाई इसको थोड़ा इससे छोटा लगता है। सर इन दोनों इंस्ट्रक्शन के बीच में क्या फर्क है? सर हैश का हैशटैग जो इसमें हैश है, इसमें हैश नहीं है, हैश टैग नहीं है। Not a Facebook like hashtag and all. This has the different purpose. Before the instructions, what are the functions? Before the instructions, accumulator may be any value, say 1, 2. But after the instructions, accumulator will be 32H. Accumulator will be 32H, means this 32H will be immediately stored into the accumulator. Is it clear or not? And sir, what about hatch? हैश के लिए ही तो बोल रहा है, इसके बारे में तो बोल रहा है। हैश होने से क्या होगा? 32H immediately stored into the accumulator. अभी हैश नहीं होने से क्या होगा वो बाद में बोल रहा हूँ। सर इसमें एक्यूमुलेटर था। ए तो एक्यूमुलेटर था, ये एसएफआई रजिस्टर में पहला वाला क्या है? हाँ सोनम, रामायण खत्म हो गया, अभी सोनम बोल रहे राम सीता का कौन लग रहा था? क्लास लेट से ज्वाइन किए थे सर। ना समीर के बारे में तुमको पता है, समीर तो नेक्स्ट में ज्वाइन किया है, अभी आवाज दे रहा है थोड़ा, जैसे सर लगे ना समीर भी है। सर आर्किटेक्चर पे नहीं ना था, इसीलिए मेरे को लगा कि ना ना आर्किटेक्चर में ये नहीं मिलेगा तुमको। आर्किटेक्चर में सर ब्लॉक डायग्राम दिखाया था मैंने, वो सब सीपीयू के अंदर है। ये तो एसएफआई रजिस्टर रैम है ना, रोम के अंदर सब कुछ है ना, रोम 128 बाइट, उसी को तो डिस्क्राइब किया मैंने। रोम के अंदर 128 बाइट, इसे बोला ना, ये सारा बोला ना मैंने तुमको, एसएफआई एरिया बोला ना, तो एसएफआई के अंदर ही तो अभी आ गया। ओके सर। तो एक्यूमुलेटर में 32H स्टोर हो जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। Yes, sir. अभी दिस 32H एक्ट एज ए एड्रेस। कौन सा एड्रेस? रैम का एड्रेस। ये रैम का जो मैंने लोकेशंस दिखाया 3023F, इसी के अंदर बीट एड्रेसेबल एरिया, इसके अंदर कोई एक एड्रेस होगा जो मान के चलो 32, 30, 31, 32, उसमें जो डेटा है, उस मेमोरी लोकेशंस में जो डेटा है वो आ जाएगा एक्यूमुलेटर में। It will be coming to the accumulator. This 32 will be act as a address. This 32 act as a data itself. 32 is a stored in immediately, but ये इसका memory locations का जो content है वो आ जाएगा accumulator में। Example sir, before the instructions maybe accumulator is 12. 32H is AB. This AB will be copied into the accumulator. So after the instructions, accumulator will be AB. 32H will be AV. Is it clear or not? It's clear? Yes, sir. 32 हैश होने से 32 डायरेक्टली स्टोर होगा, हैश ना होने से मेमोरी लोकेशन का कंटेंट स्टोर होगा। हाँ बोलो सर, एक एक बिट करके जाएगा कि एक ही बार में सर पूरा स्टोरेज? एक ही बार में चला जाएगा, एक ही बार में चला जाएगा। यस सर। It's clear to all of you? यस सर। सर इसका Yes. फंक्शंस क्या है? सेम एज यू नो इन 8085। बिफोर द इंस्ट्रक्शंस से एक्यूमुलेटर में 12, R0 में से 34। सो आफ्टर द इंस्ट्रक्शन में क्या होगा सर? बोलो। ए में 34 ए में भी हो जाएगा। हो जाएगा। ए में भी 34 एंड R0 में भी 34। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यस Yes. अभी ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, मूव ए कॉमा @R0। So before the instructions, accumulator is 12, R0 is
say 34. So after the instructions, accumulator and R0, 34H memory location में मान के चलो AB है. This AB will be copied into the accumulator. So accumulator will be AB, R0 will be 34, and 34H will be AB. What are the functions? Function बोलने से the content of R0 act as the address. The content of R0 act as the address, and the content of that particular address will be copied into the accumulator. The content of R0 act as the address, and the content of that particular address will be copied into the accumulator. I will repeat once again. The content of R0 act as the address, and the content of that particular address will be copied into the accumulator. The content of R0 act as the address, and the content of that particular address will be copied into the accumulator. Is it clear? Huh? Is it clear Yes. to you? Yes, sir. Kaliprado Pramanik. Kaliprado Pramanik. Can you hear me? Yes, sir. सर तुम्हारा वीडियो ऑन करोगे, एक बार तुम्हारा पिक्चर लेना चाहता है. हाँ, क्यों बोलो तो सर? Video. हाँ, मैंने तुम्हारा एक बार मैंने एक पिक्चर लेना चाहता है. Yes, हम sir. जेब में रखेंगे हर एक टाइम में. क्यों बोलो तो? नहीं सर, क्यों बोलो पहले हम तो एकदम क्यों चुप रहते इसीलिए सर. हाँ? एकदम चुप रहते, कुछ बोलते नहीं इसीलिए. आते भी नहीं हो. नहीं आते हैं सर, आते हैं. मैं बहुत कम सर. नाम हमारा याद रहता है नहीं सर. कम नहीं ऐसा सर. आते हैं सर, आते हैं. फिर आपका जो क्लास अटेंड नहीं करवा उसको यूट्यूब तो देख लेते हैं. यूट्यूब में YouTube में देखने से कैसे होगा सर? लाइव में क्वेश्चंस करना होगा, तब ना तुम्हारा डाउट क्लियर होगा. ओके चलो. हाँ सर, वो तो है, बट थोड़ा सर नहीं, कभी कभी नहीं हो पाता सर, थोड़ा बहुत बिजी रहते सर. बिजी पर्सन है ना यू. अकेले है ना सर, इसीलिए. यू आर द बिजी पर्सन इन द वर्ल्ड. नो सर, इतना भी नहीं सर. यही तो बोला तुमने, बिजी है. चलो, 34H मेमोरी लोकेशंस में जो रहेगा वो डेटा चला जाएगा एक्यूमुलेटर में. इज इट क्लियर टू यू ऑल ऑफ यू? अभी R0 का कंटेंट यूज होगा एज एड्रेस, and the content of that particular address will be copied into the accumulator. It's clear? Yes, sir. Yes, sir. So here add the data means, remember, just like a pointer, it will be act. These 4 instruction is very careful. You should be remember these 4 instruction. So you should be give, your instruction set will be very easier. Similar to like 8085 or something like that. If you are understand the hash without hash meaning, R0 and at the rate of R0 meaning. Okay. Remember these instructions, move A, R0. Say you want to copy like. Okay, remember one thing. By default, bank 0 is selected always by default. Say you want to copy move R5, R4. क्या इंस्ट्रक्शंस है सर? इसका फंक्शन क्या होगा? बोलो, क्या इंस्ट्रक्शंस होगा मूव R5, R4 का? बोलो. सर R4 कंटेंट R5 में चला जाएगा. मगर ऐसा इंस्ट्रक्शन 8051 में नहीं है, नहीं होता है ऐसा इंस्ट्रक्शन. तो इसको करना है तो कैसे कर पाओगे? 1 नंबर प्रोसीड्यूर है, बोलो. मूव A, R4, देन मूव R5, A. ये पॉसिबल है, राइट? इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Number 2 possibilities, move R5, 04H.
सर 04H क्यों? क्या कि R4 में 04 नहीं सर, डाटा स्टोर है सर। नो सर, नो सर, हैश देने से वो होता है, हैश नहीं है, मतलब इट विल बी ट्रीटेड एज ए एड्रेस मेमोरी लोकेशन। मेमोरी लोकेशंस। मेमोरी लोकेशन। R4 का लोकेशंस क्या है सर? ये सर वही है 04। इसीलिए मैंने मूव R5, 04H दिया। Yes, sir. ऐसा भी कर सकते थे, मूव 05H, R4। ऐसा भी कर सकते थे, मूव 05H, 04H। वो भी होता है इधर, मगर ये नहीं होता है, रिमेम्बर। इज इट क्लियर? यस सर। चलो इस वीक के लिए हम लोग आज तक खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीक में फिर से देखा जाएगा। आज टाइम का पता नहीं चला सर। हैं? आज टाइम का पता नहीं चला सर। इंटरेस्टिंग चीज था। Yes, sir. इंटरेस्टिंग चीज और आगे और भी है। माइक्रोप्रोसेसर इज लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट।